Hello students, up January 18th. So it's the time for the CBSE class 12 practicals of different subjects. So today I'm coming with a new video, how to give the practical, chemistry practical class 12 very nicely. CBSE chemistry practical. Okay. Achha, actually this type of question paper is made for the CBSE practical. You see, this is a 30 marks in your practical, and different sets of question papers are there. But basically, there are three practicals. Totally, we divided the practical work into the three types. That is, first practical, your titration. That is volumetric analysis. It will carry 8 marks. So there are two separate volumetric analysis already you have done in your practical classes. That is, one is the KMnO4 versus more salt, that is ferrous ammonium sulfate, and the another one KMnO4 versus oxalic acid. So any one practical, it should become any one practical. Next, number 2, it is the inorganic salt analysis. It also carry 8 marks. And in this salt analysis, there should be one cation and one anion there. And you should find out that cation, anion, or it may be said as basic radical and acidic radical. And the third part is the organic sample analysis. It carries 6 marks. And any one functional group is be present in this organic sample. And the functional group जो आपने किए हो, like this alcohol, phenol, aldehyde or ketone or carboxylic acid or amino group, maybe any one group, it should come in your organic sample analysis. And there are another part, that is, you have already made the practical file and you have made the project file also of any one of the topic as per the CBSE syllabus. And obviously in दो चीज़ें आपको चाहिए and respective viva, that is practical से भी viva and project according also you prepare your viva, and both the viva, both the file and viva individually carry 4 marks. So that is the total marking scheme of your CBSE practical exam. Now एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग को कैसे लिखना है. इस प्रैक्टिकल में रिटन वर्क भी होगी और साथ में तुम्हारी प्रैक्टिकल वर्क भी देखा जाएगा. तो रिटन वर्क इज़ वेरी वेरी वाइटल. प्रैक्टिकल वर्क ऑलरेडी तुम सीखे हो, जैसे सीखे हो आप लोग उस तरह करना है एग्जाम में. एंड रिटन वर्क इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी एंड बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क. वन मेन शीट मेन कॉपी मिलेगी, उसमें नेम बोर्ड रोल नंबर यू शुड राइट प्रॉपरली. एंड द फर्स्ट प्रैक्टिकल इज योर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, दैट इज योर टाइट्रेशन. देखो एवरीथिंग जो तुम लैब मैनुअल में लिखे हो सारी चीज़ नहीं लिखना है, बिकॉज टाइम पीरियड इज़ वेरी शॉर्ट, 3 आवर्स ओनली टाइम. उसमें प्रैक्टिकल भी करना है, लिखना भी है आपको. तो ओनली मेन थिंग्स, दैट इज फर्स्ट यू राइट डाउन द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट. इट विल बी ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन पेपर, जस्ट उसको देख के लिखना है. नेक्स्ट एपरेटस रिक्वायर्ड. वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑब्वियसली पिपेट, ब्यूरेट, funnel, conical flux like this, very simple apparatus. Then the redox equation involved, and you know that is both the titration, whatever it is the KMnO4 more salt or KMnO4 oxalic acid, the redox reaction is involved, and that's redox reaction stepwise you should write in your practical copy. That is जो main sheet board में मिलेगी. Then end point. End point means what is the color change of the end point. That is colorless to pink in both the cases. You should mention. Name of the indicator. In both the cases, that is KMnO4 used as a self indicator. Then you write down your observation table. जो tabular form अपने lab manual में लिखे हो उसी को इधर भी करना है. That is there will be 4 columns. One serial number, 3 experimental, these 3 turns you should give. Then volumetric volume of the KMnO4 solution in the burette, initial reading, final reading, and the final volume needed, volume actually extracted for the KMnO4 solution. तो ये करना है. Next you should done the calculation, that is जो तुम्हारी मिलेगी वॉल्यूम KMnO4 का उसको लेके एनालिसिस करना. You know the formula M1V1 equal to M2V2 and you find out the last result. And result की 2 पार्ट होगी. एक तो मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन तुमको फाइंड आउट करके दिखाना है, एंड अनदर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर. दैट इज जो भी मोलारिटी आए, मानो 0.01 मोलारिटी आए, इट शुड बी मल्टीप्लाइड विद द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द KMnO4.
ओके, एंड यू गिव द फाइनल रिजल्ट इन ग्राम पर लीटर। बहुत अच्छे से रिजल्ट को लिखना है, नीचे अंडरलाइन कर देना है क्योंकि इट कैरी द 8 मार्क्स। देन इट इज इनऑर्गेनिक सॉल्ट एनालिसिस। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग गलती करते हो, उस सॉल्ट के नंबर लिखना भूल जाते हो कॉपी में। सॉल्ट नंबर वट एवर यू गॉट इन योर स्कूल, सॉल्ट नंबर, किसी को 1 मिला है तो किसी को 19 मिला है, जो भी मिला है सॉल्ट नंबर यू शुड राइट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सॉल्ट नंबर योर कॉपी शुड बी चेक्ड। देन फिजिकल अपीयरेंस, सॉल्ट की फिजिकल अपीयरेंस जो आपको उस समय देख के समझ में आएगा। देयर मस्ट बी दिस 4 पॉइंट्स: कलर ऑफ द सॉल्ट, फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्ट, सॉलिड लिक्विड, ओडर दैट इज स्मेलिंग, कोई ओडर अगर नहीं है तो यू मस्ट राइट नो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, एंड द सॉल्युबिलिटी, इज इट वाटर सॉल्युबल और नॉट, जस्ट यू राइट दिस थिंग। देन टेस्ट फॉर द कैटन, जैसे कि ग्रुप एनालिसिस अपने किए हो उसी तरह लिखते जाना है। ये ग्रुप 0 किसी को है तो ग्रुप 0 तक ही लिखेगा, और किसी को मानो ग्रुप 3 मिला है तो ग्रुप 0 एब्सेंट, ग्रुप 1 एब्सेंट, ग्रुप 2 एब्सेंट, देन यू शुड कम टू द ग्रुप 3। लाइक दिस यू शुड राइट इन योर मेन शीट। देन कन्फर्मेटरी टेस्ट, किसी को लीड मिला है तो ऐसा नहीं बोलना जो लीड ही मिल गया है, मे बी प्रेजेंट बोल के लास्ट में कन्फर्मेटरी टेस्ट करना है। जिसको कॉपर मिला है तो यू शुड राइट द कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ द कॉपर। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट फॉर द एनायन, अगेन उसी तरह स्टार्ट करना है, कार्बोनेट से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये इसमें ऐसे टेस्ट किए, कार्बोनेट एब्सेंट है, देन क्लोराइड ब्रोमाइड के टेस्ट, देन नाइट्रेट के टेस्ट, देन एसीटेट के टेस्ट, देन सल्फेट के टेस्ट, लाइक दिस। जिसको कार्बोनेट मिल गया उसका तो एक ही में हो गया, वो तो बाई लक है जैसा है। तो आपको टोटल लिखना है, ऐसा नहीं कि हमको सल्फेट मिला है तो आई ओनली राइट डाउन द टेस्ट ऑफ सल्फेट, नॉट लाइक दिस। सारे एब्सेंट है तो हमको सल्फेट मिला है, एंड लास्ट में जो भी मिला है उसकी कन्फर्मेटरी टेस्ट यू शुड राइट। ओके, एंड द लास्ट वन इज द रिजल्ट। माई सॉल्ट कंटेन कैटायन दिस वन, एनायन दिस वन। बहुत बच्चे ये नहीं लिखते हो तो यू शुड राइट। अगर सॉल्ट के फॉर्मूला भी लास्ट में लिख सकते हो, नेम ऑफ द सॉल्ट, तो यू शुड राइट सपोज एनी वन गॉट द PbCl2 सॉल्ट। ठीक है, तो व्हाट कैटन ही गेट, that is a Pb2 plus, so you must write like this Pb2 plus. what anion you get ना Cl माइनस, इतना लिखना ही है। लास्ट में अगर सॉल्ट का फॉर्मूला या सॉल्ट का नेम तुम लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आई हैव द सॉल्ट PbCl2 लीड क्लोराइड, और अगर नहीं आता है तो कम से कम दिस मच यू कैन राइट। नेक्स्ट प्रैक्टिकल योर ऑर्गेनिक सॉल्ट বা organic sample analysis, again that salt number या sample number is physical appearance, that 4 point color, state, odor and solubility. ठीक है, functional group analysis, तो functional group analysis also in the same way, first you do the test for the alcohol, F alcohol absent, then phenol, phenol absent, then aldehyde, aldehyde absent, ketone, like this you must do. Suppose anyone got amino group and just write amino group, not like this: alcohol absent, phenol absent, aldehyde absent, ketone absent, carboxylic acid absent, then lastly he get the amine. Like this you have to write. And last result, result is very vital. You leave the sample containing this functional group. Suppose anyone got the amino group, so he must write the NH2 group, or you write down the amino group. In this way you should complete your main sheet, and the writing portion should be very nice, clear handwriting, and everything should be clear, because that is the main evidence for your CBSE practical, and this copies goes to the board, है ना, तो कॉपी बहुत बेहतरीन होना चाहिए। नेक्स्ट वी कम टू द पॉइंट ऑफ वाइवा, दैट इज प्रैक्टिकल रिलेटेड एनी क्वेश्चन, योर एक्सटर्नल योर इंटरनल, दे मे बी आस्क। प्रोजेक्ट रिलेटेड, जो प्रोजेक्ट आपने बनाए हो तो उस प्रोजेक्ट के बारे में एक आइडिया होना चाहिए। ऐसा नहीं है हम प्रोजेक्ट कहीं से कॉपी कर लिए हम लेके चले गए, वो नहीं, तो प्रोजेक्ट के बारे में एक थॉरो आइडिया होना चाहिए। ठीक है, सपोज एनी वन मेक ए प्रोजेक्ट ऑन फूड प्रिजर्वेशन, तो ही और शी शुड हैव द आइडिया about the different type of preservatives, which preservative is on the which food, what is the chemical equations involved, what is the chemistry involved behind this, like this type of question. And practical lab manual file and related practical जो viva होती है वो any questions may be asked, that is what is the indicator, what is the chemical equations involved, what is the redox reaction related any questions, what is primary standard solution, what is secondary standard solution, in the case of the titration of KMNO4 versus oxalic acid, why the heating is required. and बहुत बच्चे ये KMNO4 मोर सॉल्ट जब टाइट्रेशन होते हैं
एसिड ऐड करना भूल जाते हो तो माइन्यूटली ख्याल करना है, जो सल्फ्यूरिक एसिड शुड बी एडेड ड्यूरिंग द टाइट्रेशन, before your titration, and why this acid medium is required. That type of question also can be asked because DNA block chemistry is in your syllabus. Inorganic salt analysis, suppose somebody got sulfate, somebody got nitrate, तो what is the chemical equation involved behind this? ये तुमको सल्फेट मिला है तो ऐसा नहीं कि हमको वाइट पीपीटी मिल गया है बेरियम क्लोराइड ऐड करके तो आई अब सल्फेट. What is the chemical equation? What is the formula of that precipitate you got? What is the formula of that brown colored gas involved in case of the nitrate? What is the formula of the brown ring test? Brown ring जो form हुआ उसकी formula क्या है? Like this type of question can be asked. And in the organic whole your theory syllabus also is there. Every group you have learned in your class 12 syllabus. तो organic practical से any question can be asked. Suppose anybody got the amine, so its question should be asked, that is you can write the formula of azodie, how this azodie you get, what is the test for the aldehyde group, like this type of question it may be asked. Okay, so you should prepare all of you very nicely for your CBSE practical. Best of luck to all of you.